A very good morning to one and all. So children, today we are going to discuss next topic of chapter. In a previous lecture we talked about the different shape current carrying conductor and the shape of the magnetic field or the magnetic field around those conductor, current carrying loop, straight wire and solenoid, and we talked about the electromagnet. Now we will talk about the next topic, that is the force on a current carrying conductor when placed in a magnetic field. As by the name of the topic we can understand, force on a current carrying conductor. Force on a current carrying conductor when placed in a magnetic field, that means by some activity or the experiments, it is found that when we place any current carrying conductor in magnetic field, that current carrying conductor experiences some force when placed in a magnetic field. राइट तो जब भी आप किसी भी करंट कैरिंग वायर को किसी मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हो तो उसमें कुछ अमाउंट ऑफ फोर्स एक्सर्ट होता है या वो इन मोशन होती है, राइट. बट द टाइम व्हेन अमाउंट ऑफ करंट इज फ्लोइंग थ्रू दैट कंडक्टर, राइट, that above topic we can understand by some activity, right. For that activity what happens, we are just taking a magnet, that is the horseshoe type magnet, that is the horseshoe type magnet. We and in between the both ends of the magnet we take a aluminium wire. We take aluminium wire and two ends of the aluminium wire is connected by the connecting wire, right. So this strip is the aluminium wire that will act as the conducting wire, and this will be the connecting wire by which we are just connecting the circuit, and the connecting wire is connected by the battery and the key, right. The situation is like this. If this is a magnet, right, and this is a aluminium strip, right, and this is the condition, right. This is horseshoe type magnet that gives you the strong magnetic field, and this is the aluminium wire, and both ends of the aluminium wire is connected with the connecting wire, and connecting wire is connected with the battery and the key, right, to flow the current, right, in the aluminium wire. So when amount of current flows through the aluminium wire that will act as the conducting wire, then it is observed that when current is flowing and it is placed in the magnetic field, then that aluminium wire experiences some force, right. That aluminium wire experiences some force when current is flowing through it, right. And what happens when we reverse the connection of the battery? When we reverse the connection of the battery, so motion will be just opposite to before motion, right. आपने क्या किया? What happens to you? हमने जैसे ही इस एल्युमिनियम स्ट्रिप में करंट फ्लो कराई तो जो वायर का मोशन था वो किसी भी एक डायरेक्शन में, अपवर्ड डाउनवर्ड, मे बी इट हैपन, दैट डिपेंड्स ऑन द टोटली ऑन द डायरेक्शन ऑफ द करंट. एंड वेन जब आपने एक डायरेक्शन में मूवमेंट हुआ, सपोज अपवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट हुआ, राइट, एंड अगेन जब आपने क्या करा, करंट फ्लो कराई बट इन द अपोजिट डायरेक्शन, राइट. अभी बैटरी इस तरीके से कनेक्ट है, अगर मैं बैटरी को रिवर्स कर दूँ, दैट मीन्स उसके एंड्स रिवर्स कर दूँ तो रिवर्स डायरेक्शन में, तो उसका जो मोशन था फिर वो अपोजिट डायरेक्शन में था, राइट. तो मोशन ऑफ कनेक्टिंग वायर दोनों सिचुएशंस में हुआ जब भी हमने करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करा एंड बिफोर रिवर्सिंग. बट दिस इज नेसेसरी, द करंट शुड फ्लो इन द कंडक्टिंग वायर, राइट. बट ये जरूरी है इसके लिए कि करंट फ्लो होनी चाहिए जो भी आप कंडक्टिंग वायर ले रहे हैं. तो यहाँ पे हमने जो कंडक्टिंग वायर ली है वो दैट इज द एल्युमिनियम वायर, दैट इज द aluminium wire. We take the horseshoe type magnet. Now from this activity they concluded that when any of the conducting wire, current carrying conducting wire is placed in a magnetic field, there is some experience of force in connecting wire, right. तो उस टाइम पे हमने ऑब्जर्व किया कि जो भी कंडक्टिंग वायर है वो एक फोर्स एक्सपीरियंस कर रही है जब हमने उसे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करा एंड उस वायर में करंट फ्लो कर रही है, राइट. अब इसी एक्टिविटी को, दैट एक्टिविटी इज वेरी यूजफुल, बट हाउ वी आर यूजिंग दिस एक्टिविटी विल टॉक लेटर ऑन, राइट. नाउ द कंडीशन इज दैट हाउ कैन वी अंडरस्टैंड एंड हाउ डू वी नो इन व्हाट डायरेक्शन motion will happen,
राइट। अब आपको ये तो पता है जो मूवमेंट होगा कंडक्टिंग वायर का, जो भी आपने मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करा है, बट किस डायरेक्शन में होगा, अपवर्ड होगा, डाउनवर्ड होगा, वो किस डायरेक्शन में होगा, राइट। टू डिफाइन द डायरेक्शन ऑफ मोशन वी आर जस्ट यूजिंग वन रूल, दैट इज द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, राइट। उसका मोशन किस डायरेक्शन में होगा, राइट, क्योंकि दो चीज़ें हमें पता है, हमें ये पता है कि करंट फ्लो हो रही है, हमें दूसरी चीज़ पता है कि जो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है, राइट। मैग्नेटिक फील्ड की भी डायरेक्शन पता होगी आपको, ये दोनों एंड्स पता होंगे, नॉर्थ टू साउथ आपके पास डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगी, राइट। करंट किस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, दैट विल ऑल्सो वी नो, बट वी डोंट नो the direction of motion of conducting wire, the direction of force that is exerted on the conductor, and what direction force will exert, right. To define, to calculate, to find out the direction of force, we just use the Fleming's left hand rule. We just use the Fleming's left hand rule, right. So with the help of the Fleming's left hand rule, we can calculate, we can find out the direction of motion when any conducting current or current carrying conductor is placed in magnetic field. Now just see what is the rule. Fleming's left hand rule says that if we stretch the three fingers, thumb, forefinger and middle finger of our left hand in such a way that all are perpendicular to each other, right, all are mutually perpendicular to each other. There may be the angle of 90 degree, there should be an angle of 90 degree, and in all between angle of 90 degree will be there, राइट। तो आपको ये पता है कि अगर हम अपने लेफ्ट हैंड की थ्री फिंगर्स को, इनिशियल फिंगर्स को, थंब, फोर फिंगर एंड मिडिल फिंगर को इस तरीके से स्ट्रेच करें कि तीनों एक दूसरे के तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो, तीनों के बीच में जो एंगल फॉर्म हो रहा हो वो 90 डिग्री का हो, राइट। सो दिस थंब विल गिव्स अस द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, right, this forefinger will gives us the direction of magnetic field, and this middle finger will gives us the direction of the current. Then we can have M, F, C, right. M for motion or force, F for magnetic field, right, and C for current, right. So according to Fleming's left hand rule, if we stretch the three initial fingers of our left hand in such a way that all are mutually perpendicular to each other, then this thumb will gives us the direction of force or motion, this forefinger will gives us the direction of magnetic field, and this middle finger will gives us the direction of current, right. So you can just write down like this. This will be our thumb, this will be our forefinger, and this will be our middle finger. Middle finger, right. So this will gives us the direction, thumb will gives us the direction of the force or motion. You can write down. This will gives us the direction of the magnetic field. Magnetic field we can be represented by B, and sometimes we can just write down like magnetic field, right, and I is denoted by the current, or you can just write down the current, right. Now to just in a short, there is a short trick you can just understand it by, because whenever you will just have the next rule, then there will be some confusion in that. So to understand it, what can we do? M, F, C. M for motion, F for field, magnetic field, and C for current. Mother, father, child, right. So this rule can be known as mother, father, child, right. M for motion, mother for motion, father for field, magnetic field, and child for current, right. So F, M, F, C, M, F, C, mother, father, child, right. By this short trick you can just recall this law anytime, right. एक short trick है, you can just understand it by, otherwise you can just understand it by as it is, right. Now, so as you know,
अब आपको पता होगा कि डायरेक्शन जिस भी करंट में, अब हम अपने 4 फिंगर्स को, अगर हम 3 फिंगर्स को इस तरीके से अरेंज करें तो विद द हेल्प ऑफ द डायरेक्शन 2 चीज़ें हमें पता होती हैं, मैग्नेटिक फील्ड पता है, वी नो द डायरेक्शन ऑफ करंट, सो वी कैन कैलकुलेट द डायरेक्शन ऑफ द मोशन, डायरेक्शन ऑफ द फोर्स अप्लाइड और द मोशन ऑफ द कंडक्टर, राइट? So this is one thing we are having. Now in the next topic we will just talk about basically about the electric motor, right?